अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, दुआओं के साथ हो रही है ईद की तैयारी। मैंने भी सोचा आज की रेसिपी कुछ ऐसी बनाएं जो आप खा सके फॉर आपकी सहरी और इफ्तारी। वाह 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 वाह, शायरी बुरी थी लेकिन खाना बहुत अच्छा बनेगा। Hello and welcome to the Shilpa Shetty channel, and this is the art of loving food. रमजान में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आज हम बनाने जा रहे हैं easy to make kebabs, जो फिलिंग भी है और हेल्दी भी। इन्हें हम बनाएंगे using the Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread. It's made of creamy milk, which makes it yummy and tasty, and the probiotics in it help support immunity. Chana dal is a great source of protein, whereas potatoes are high in carbs and fiber, and they keep you fuller for much longer. तो आइए शुरू करते हैं। चना दाल जो है हमने सोक किया है ओवरनाइट, and we now roast it with our Nutralite DoodhShakti Probiotic Butter Spread. जब हमने सोक किया था तो 1/4 कप चने को सोक किया है और अब बन जाता है हाफ अ कप। अब इसमें हम डालेंगे कैबेज, 1.5 cups of cabbage. It's chopped finely. Add in the chilies, the mint. Now we add in the ginger. चलिए 4 मिनट तक हमने इसे रोस्ट किया है। Now we take it out and we blend it all in. So we now just grind it all. ये कंसिस्टेंसी देखिए, it shouldn't be too pasty, has to have a bite. अब इसमें जाएगा हमारा बॉइल्ड पोटैटो, 2 बड़े आलू, मिक्स इट ऑल इन। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला आधा टीस्पून, सौंठ का पाउडर आधा टीस्पून, सॉल्ट। Just mix it all in. चलिए बनाते हैं हमारे कबाब्स। ये बन गए। Now we shallow fry the kebabs. Oh, that is so perfectly done. बड़े मजेदार लग रहे हैं यार, और इन्हें और भी ज्यादा मजेदार बनाया है न्यूट्रलाइट दूधशक्ति प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड ने, which truly is the butter way to do it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.
Do press the bell icon to make sure you get all the latest updates. And do download the Simple Soulful app now. I can't wait for you to try these. फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आप सभी को रमजान मुबारक।